God bless you, students. Today we will study the last topic of the chapter number 4, sulfuric acid preparation by contact process. Most important for long as well as short, but this chapter is important for a short question. So this process is every step of this process is important for a short question. First of all, sulfuric acid is what is a sulfuric acid? Sulfuric acid was first prepared by a Muslim scientist Jabir bin Hayyan in 18th century Europe in 14 and 15. Preparation on commercial level as due to the awareness of its properties and uses. It was called oil of vitriol. Important for MCQ, speech number 70. So, sulfuric acid is act as a corrosive. They are using as a washing powder, as a washing material. There small quantities of H2SO4 are found in the waters of the some springs and rivers. Main principle of manufacturing of a sulfuric acid by a contact process. First of all, SO2 obtained by burning. Sulfur or iron pyrites is oxidized to SO3 in the presence of a V2O5. V2O5 vanadium pentoxide is act as a catalyst. Then SO3 is converted into SO3 is converted into H2SO4. This concentrated H2SO4 and aluminum H2S2O7 formed can be converted to sulfuric acid of any strength by mixing adequate quantities of water. The process is completed in the steps given below. First step, sulfur burner. Sulfur or iron pyrites. First of all, sulfur is react with oxygen in the presence of a 400 to 500 degrees Celsius and the catalyst V2O5. They are converted into SO2. Sulfur dioxide is also formed by the pyrite, iron pyrites. FeS2 or 11 oxygen molecules are react. They are converted into iron oxides and the sulfur dioxide. First of all, purifying the second most important point is purifying unit. SO2 is purified from a dust and arsenic oxides avoid poisoning of a catalyst. Dust and arsenic oxide is causes for a poisonous, so the SO2 is removed, purified the dust particles and arsenic oxide. Different steps. First, dust removal. Steam is injected. High steam is injected to remove dust particles from the gases. Through a steams, the dust particles are react with the water molecules. Steams molecules vapors, they are converted into a liquid and they pass out. Cooling pipes, the gases are passed through lead pipes to cool them to 100 degrees Celsius. Scrubbers, the cooled gases are washed by a spray of water as SO2 is not soluble in water at high temperature. Cooled gases are washed by a spray of water. वाटर के पानी के साथ हम इसको क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे. SO2 इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि हमारे पास SO2 जो सा है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है जब वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है. Drying towel, the moisture of the gases is removed by concentrated H2SO4 trickling down through the cook filled in this towel. Arsenic purifiers. Arsenic oxide is then removed by passing the gases through a chamber provided with the shelves packed with freshly prepared ferric hydroxides. Texting box. Next, in this box, a beam of the light is introduced which indicates the presence or absence of a solid particles. वहाँ पर लाइट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है. अगर वहाँ पर कोई हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ अटैच हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, नज़र आ जाएंगे. उससे फिर क्या होगा कि आप उसको प्योरीफाई और
कर सकते हैं। फिर दोबारा आप क्या करेंगे, डस्ट रिमूवर में से गुजारेंगे, कूलिंग पाइप में से, स्क्रबर में से, ड्राइंग टावर में से, आर्सेनिक प्यूरीफायर में से, और देन एट द एंड फिर टेस्टिंग बॉक्स में ऐड करेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, प्यूरीफाई होकर हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। कंटेक्ट टावर नेक्स्ट, इन अ कंटेक्ट टावर SO2 is react with O2. They are converted into SO3, 400 degrees Celsius to 500 degrees Celsius, and evolved energy minus 269.3 kilojoule per mole. Next, absorption units. SO3 obtained from the contact tower is dissolved in 98% H2SO4. This H2SO4 is react with SO3. They are converted into alum H2S2O7. This alum is reacted with water molecules. They are converted into H2SO4. The overall process of the manufacturing of a H2SO4 is important. Every step is important for a short question. Properties of the sulfuric acid. Pure sulfuric acid is a colorless oily liquid without an odor. Specific gravity 1.834. Freezes 10.5 degrees Celsius. Boiling point 338 degrees Celsius. Dissolve in water, liberating a lot of heat. जब आप इसको पानी में ऐड करते हैं तो देन वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस. अगर आप पानी में एसिड ऐड करेंगे तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. ठीक है. शुड ऑलवेज पोर्ड इन वाटर इन अ थिन स्ट्रीम ऑफ अवॉइड एनी एक्सीडेंट. ठीक है. आपने क्या करना है कि बॉटल में पानी में आपने एसिड को नहीं डालना, बल्कि एसिड में क्या डालना है, आपने पानी को डालना है. ठीक है. क्योंकि जैसे ही आप पानी में आप एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से स्टीम निकलेगी, वहाँ का उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और कुछ जो से हैं उसके जो से हैं छींटे वो आपके बॉडी के पे पड़ सकते हैं. इसलिए आपने क्या करना है, एसिड पहले किसी बॉक्स में लेंगे और उसमें आप क्या करेंगे, पानी ऐड करेंगे. किसी ऐसी चीज़ में लें जो सी क्या ना हो सके, मेल्ट ना हो सके. प्योर एसिड इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट द एडिशन ऑफ अ लिटल वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर. इट इज़ एक्सट्रीमली corrosive to skin and cause very serious burns to all the tissues. God bless you, students. Take care.